Assalamu alaikum. I hope you're doing well, and I hope everyone at home is doing well as well. I'm back with some updates for the month of January and a few from December as well. So सबसे पहले ये है कि हमने कुछ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की थी स्कूल के अंदर कुछ प्री स्कूल के लेवल पे थी एंड द रेस्ट ऑफ देम वर फॉर एलिमेंट्री एंड मिडिल ईयर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सेशंस वेंट प्रिटी वेल जो प्री स्कूल का था सेशन दैट वाज प्राइमरीली अबाउट कंसोलिडेटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजियो प्रिंसिपल्स एंड हाउ टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस और जो एलिमेंट्री एंड मिडिल ईयर्स था उसका थीम ये था कि हाउ डू वी टीच चिल्ड्रन विदाउट आस्किंग देम टू रेज देयर हैंड्स सो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स पेडागॉजिकली कॉम्प्लेक्स आइडिया है कि हैंड रेजिंग इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी इनकरेज वेरी ऑफन सो अगर हमने ये नहीं करना तो हमने क्या करना है उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबी ट्रेनिंग की एंड द टीचर्स प्रिटेंडेड टू बी स्टूडेंट्स एंड आई वाज द टीचर फॉर देम एंड हम लोगों ने तकरीबन एक हफ्ते तक डिफरेंट डिसिप्लिन्स के सब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स को हमने टच अपॉन किया और उनकी क्लासेस कंडक्ट की एंड द टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड इन द सेम स्पिरिट जो हमारी नेक्स्ट टीचर वर्कशॉप्स हैं वो भी रखी जा रही हैं और उनमें से एक है स्टेप इनटू माय शूज़ वेयर वी आर इनवाइटिंग पेरेंट्स टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टेक अ मैथ क्लास एट द स्कूल। इसके अलावा भी जो बाकी हमारी पेरेंट वर्कशॉप्स हैं उनकी भी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। वो हमारी टेंटेटिव डेट्स हैं, विल ट्राई नॉट टू चेंज मैनी डेट्स, पर अगर कोई आगे पीछे हुई तो वील कीप यू पोस्टेड। But hopefully for the coming month, we will have another support group. We'll have step into our shoes and we'll have one parenting workshop. And पहला जो हमारा support group था फ्यूचर ऑफ लर्निंग वाला वो बहुत इफेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट हो गया। काफ़ी होलसम एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, आई थिंक फॉर द पेरेंट्स एज वेल हु अटेंडेड इट एंड वी वांट टू कीप इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। सो द नेक्स्ट सपोर्ट ग्रुप इज नाउ गोइंग टू बी हेल्ड hopefully by the 20 on the 25th of February. In case you have missed the first one, you can join us for that. If there is any change in date for any of the workshops, we'll keep you posted. अनफॉर्चुनेटली हमारा कम्युनिटी डे जो है वो फिर से पोस्टपोन हो गया एंड हम भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस बारे में, आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। बस मसला यही है कि इतना बड़ा अफेयर है कि अगर हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें और वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाए तो खाना वेस्ट हो जाएगा। तो शायद अब ऐसे ही परहैप्स हमें करना पड़े कि हम एक फ़ाइनल डेट लॉक कर दें और अगर उस दिन खुदा ना खास्ता ना हो सका तो हम आपसे कहेंगे प्लीज़ खाना हमसे कलेक्ट कर लें, बाकी सब ऑल इज़ गुड। लेकिन टेंटेटिवली फॉर नाउ हम जो डेट सोच रहे हैं दैट इज़ अराउंड द 4th of March। वेल लेट्स सी, लेट्स होप कि ऑल गोज़ वेल तो हम फिर इस डेट को फॉर्मली भी कम्युनिकेट कर देंगे। बाकी फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट किया था इस दफ़ा हमने इन द मिडल ऑफ द ईयर एज़ वेल, ऑल्दो द जनरल प्रैक्टिस हैज़ बिन कि हम उसको साल के एंड पे सर्कुलेट करते हैं, बट इसलिए मिडल ऑफ द ईयर कर दिया था कि अगर कोई ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि किसी को भी नैग कर रहे हैं तो वो टाइमली वे से हमारे पास भी आ जाए। और हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेमेस्टर है, सो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स ड्यूरिंग द ईयर एज़ वेल रादर देन वेटिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंजेस। सो अगर आपने फीडबैक फॉर्म नहीं फिल किया या इन एनी केस यू नो देयर इज़ एनीथिंग दैट्स बिन बॉदरिंग यू एंड यू वांट टू कम एंड डिस्कस दिस विद अस, प्लीज़ डू नॉट डिले इट। आएँ, बात करें। आपके सजेशंस, आपके कंसर्न्स आर रियली वैल्यूबल इन हेल्पिंग अस इम्प्रूव व्हाट वी आर डूइंग। सो always looking forward to good suggestions and good feedback. बाकी electives is one thing जिसमें हमने थोड़ा सा restructuring की थी। हम honestly electives के साथ वो right mix की तलाश में हैं कि what is it that we do that would stick the most. We have had like 2-3 different formats of electives. कभी हमने उनको subjects कम करके like disciplines कम करके durations of electives बढ़ा के भी देखा हुआ है. We have tried a few things with that because obviously not a lot of schools offer electives. Like I don't know of any other schools in Islamabad that do. So there's like no tried and tested formula of what works when it comes to electives, and we have to come up with this thing on our own. तो यही होता था कि अगर हम थोड़ा लंबी ड्यूरेशन के electives लेके जाते थे तो the children would start losing interest in those, and ये भी है कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बाहर की लोगों को रिक्रूट करके electives कंडक्ट कराएं तो उसके अंदर भी वो एक डिसिप्लिन थोड़ा सा लैक करना शुरू हो जाते हैं। जो लोग पार्ट टाइम आ रहे होते हैं तो उसमें भी स्ट्रगल आ जाती है, कभी लेट हो गए, कभी मिस हो गई क्लास। जो इंटरनल टीचर्स होते हैं दे आर लॉट मोर डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू conducting classes and all of that, but we're kind of getting there and we want to leverage the parent body in this regard as well. So abhi ke liye jo hamara format hai wo yahi hai कि we are going for short term workshops on life worthy learning के topics themes, जिसमें हमारी कुछ teachers existing deliver कर रही हैं, कुछ हम guest speakers बाहर से बुला रहे हैं, कुछ हम parents से request कर रहे हैं if they can come and teach some of those things to our students. Anything life worthy, any you know even if it's like one nice session that gives some information to the children that allows them to make that makes a valuable addition to their schema of understanding of the world, so that's worth it. So that's the format जिसमें हमने
वेंसडे का दिन तो डेडिकेटेडली गेस्ट स्पीकर्स के लिए रख दिया है एंड बाकी दिन जो हैं उसके अंदर पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइट मोर देन वेलकम टू कम एंड शेयर एनीथिंग दैट दे लाइक टू share with the children when it comes to life worthy learning. So that's the format, and we're going to see how it pans out. And if there are any further improvements that are needed in this department, we will continue to make those improvements till we lock the right way to conduct these electives. And beach mein ye bhi aaya tha ki the children were getting a little disgruntled with electives and they wanted more of a choice time. तो हमने एक डेमोक्रेटिक मीटिंग भी की थी एंड उसके अंदर भी कंक्लूजन यही रीच किया था. बच्चों ने खुद दे रीच दिस कंक्लूजन दैट दे लाइक टू स्टिक टू electives as long as the quality of electives improves, and that is something that we are trying to work on. बाकी जो हमारे मेन चैलेंजेस आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने से रहे हैं, बट आई थिंक दे बिन देयर प्रीटी मच कोविड के बाद से, are related to kind of information that children are now getting exposed to at a very early age, and क्या करना है इस सब का. And मसला तो यही है कि a school is a hot pot of a lot of different family values, a lot of different parenting styles, and it tries to be that great equalizer, which it often is not able to be, on its own. So जो चीज़ हम experience कर रहे हैं वो ये है कि the children are getting exposed to information that is not age appropriate at a very early age as compared to how it was for us, and no one can be blamed for it solely because आप कहाँ से रोक सकते हैं. अगर आप अपने बच्चे की डिवाइस के ऊपर लॉक्स एंड पॉलिसीज सारी इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी हम विल इंश्योर कि हमारा बच्चा डजंट गेट एक्सपोज टू एनी इन्फॉर्मेशन, दे गो टू द स्कूल, दे कैन गेट टू नो थिंग्स फ्रॉम अ चाइल्ड जिसके घर में इतनी सख्ती नहीं हो रही, फॉर इंस्टेंस, और दे कैन नो फ्रॉम अ कज़न, और दे कैन गेट टू नो थिंग्स फ्रॉम children on the street. So you can't really essentially control information as such. So what can you do if this is something that is beyond your control or beyond the control of a school? Is to build the capacity of the children to understand or process information, and to process and to kind of stand up when they feel that things are not going right around them. So एक parent ने हमें बड़ा अच्छा एक suggestion दिया था. एक तो ये था कि जब भी बच्चे devices पर हों घर पर, तो please ensure कि they use their devices under your supervision. They don't use their devices under the supervision of house help, nannies, grandparents, because they can't really, know what a child is watching. And it is really becoming a rabbit hole. YouTube hai ya jo bhi hai, one video after another, it just keeps on building onto whatever the child is watching, and it just takes them in directions that we as adults can't even understand anymore. तो एक तो ये है कि always monitor when your child is using a device कि वो क्या देख रहे हैं, monitor their history. It's your right to do that. It's not you're not infringing on their privacy if you're looking at what is it that they're watching, because they're still children. The second thing is que, tell children that it's not okay to keep secrets, and if there is anything that is inappropriate being discussed between their friends, they need to stand up and they need to make some noise about it. Not like us time unke saath ladna shuru kar dein, but at least they come and let you know, or an adult know, that something is going on that needs to be addressed. So they stand up for things that don't seem to be right. So यही है, बच्चों की आप capacity building कर सकते हैं. साथ साथ we are also at the same time trying to figure out with some scholars as well and some psychologists and all that, what's the right way to go about telling children about the more, I don't know, realities of life that we try to shield our children from for a very long time. So उन realities को disclose करने की क्या age है, क्या strategy है, क्या steps हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी information अपनी भी लिए gather करें, because ये ज़्यादा challenge हमें आ रहा है COVID के बाद से, जब children started developing an understanding of using technologies in ways which they were not doing so before COVID. So हम भी अपनी capacity build करें, and when we have a guideline of sorts, we are going to share it with the parents. But in the meanwhile, what I can suggest is to maintain open communication channels with your children and to monitor what's happening and to build their capacity around these devices. फिर जो आगे वाले levels हैं, middle years and above, वहाँ पे जो बहुत main challenges आ रहे हैं and parents को भी उसके लिए prepared रहना चाहिए, are going to be things that we perhaps did not struggle with as much growing up, but because there is so much noise around these topics now that you can't even ignore them. They are matters of gender identity, they are matters of getting attracted to the other gender, which I think has been an age-old thing that all schools or all parents have dealt with. But gender identity is a new one, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर इस तरह की सख्ती ना हो कि वो झूठ की आदत हो जाए, या वो आपसे छुपना शुरू हो जाए, या वो
डर डर के ज़िंदगी गुजारते तो रहें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी एक और पैरेलल वर्ल्ड खुल जाए जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हों, दैट द पेरेंट्स डोंट नो ऑफ. सिमिलरली ड्रग्स और इस तरह की भी चीज़ों पे, these are very sensitive matters to navigate through. You just can't say, beta, I don't like it, don't do it, and that's the end of the world. If you do it, I'm going to take away this privilege, that privilege, or you just can't say namaz pad lo sab, and everything will be okay. You really need to understand that these are very complex matters to understand, and the worst thing that your child can do at this stage is to start hiding things from you, or to not trust you, or to be really scared of you. Because हो सकता है कि वो temporarily तो चीज़ें आपके सामने ना आए, but your child might just become very good at lying or very good at hiding things, and that is perhaps the bigger problem. You have to help them understand that what a problem is, and how is it a problem, and if it is a problem, how to come out of it problem, and how to not become a source of spreading a culture दैट इज़ नॉट हेल्दी, तो ये सब कुछ ऐसे ही हो सकता है जब बच्चा आपको ट्रस्ट करेगा और आपसे बात करना चाहेगा. अगर बच्चा बात नहीं करना चाहेगा तो वो अपने लिए भी किसी they'll become a source of harm for themselves, and they can become a source of harm for others as well. एक पेरेंट से रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ही वैल्यूबल चीज़ कही है, एंड आई विल शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द पेरेंट कम्युनिटी एज वेल, कि जो खासतौर पे टीनेज बच्चे होते हैं, they're looking at you like they're pushing your boundaries, and they're elastic band की तरह जितना आपको stretch कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं, और जहाँ पे वो देखते हैं कि आप snap कर गए हैं, वहाँ पे वो अपना एक क्रॉस लगा लेते हैं कि अब इस चीज़ के बारे में तो इनसे बात नहीं करनी. एंड यू रियली वांट ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स टू बी ओपन बिटवीन योर चाइल्ड एंड यू, एंड स्ट्रिक्टनेस या मैं क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो ये बस बिल्कुल नहीं होगी इज़ maybe not the bandit that the children need. They need communication, they need reasoning, they need एक्सेप्टेंस. एंड जैसे हम एडल्ट्स गलतियाँ करते हैं, बच्चे भी गलतियाँ करेंगे, एंड जितना हम अपने आप के लिए फॉरगिविंग होते हैं, हम थोड़ा बच्चों के लिए भी फॉरगिविंग होना पड़ेगा. वी कांट हैव लाइक वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर चिल्ड्रन. हैविंग सेड सो, वी ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज के बच्चों की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि नीड टू बी केप्ट इन माइंड, एंड उनके साथ ही हमें नेविगेट करना होगा. हम उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएंगे, ऑब्वियसली बताएंगे, बट थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो थोड़ा वी हैव टू बी a little cautious about these things. So these are some of the things that we do struggle with and have been struggling more so after COVID. और ये महीना कुछ इस तरह के मैटर्स को रिजॉल्व करने में स्कूल में गुजर रहा था, बट आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ द पेरेंट कम्युनिटी इज़ ऑल्सो ऑन द सेम पेज, एंड एटलीस्ट अगर हमारी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी करीब करीब आ जाएँ एज अ कम्युनिटी, तो इट विल बेनिफिट एवरी वन. लास्टली ये है कि हम आईएट की ब्रांच जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग वेल. अगर कोई आपकी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको आप पर्सनली रेफ़र करेंगे, एंड अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उनका नाम हमें बता सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फैमिलीज़ हु अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर. वैसे एडमिशन्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल एड रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बट वी ट्राई टू फाइंड फैमिलीज़ हु कैन काइंड ऑफ कनेक्ट विद द विजन एज वेल. That always has been a priority. We surround ourselves with people who value what is happening here, rather than us trying to convince कि ये आपके लिए अच्छा स्कूल है या नहीं है. So if you would like to make any recommendation for any other family, please feel free to do so. You can contact us through help desk. And यही हमारी की updates हैं, and inshallah in the coming months हम अपनी थोड़ी यही parenting workshops में भी engaged रहेंगे. स्कूल के अंदर जो observations हैं टीचर्स की, वो ज़्यादातर इन्हीं ट्रेनिंग की बेसिस पर होंगी. जो अभी ट्रेनिंग दिसंबर में कंडक्ट हुई है, उसी की बेसिस पे आगे ऑब्जर्वेशंस भी हो रही हैं, टू मेक श्योर कि वी कीप ऑन गेटिंग बेटर एट दिस प्रैक्टिस. इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स वांट टू जॉइन द teaching community, so that's also something that you should let us know about around this time, because हम इसी टाइम के आसपास पूछ रहे होते हैं टीचर्स if anyone would be discontinuing next year, and if there are going to be any vacancies, तो हम साथ साथ around March तक हम figure out करना शुरू कर देते हैं who's going to take what position next year. So stay in touch. I was really hoping to see everyone during the community day and during the workshops. लेकिन हो नहीं पाया, एंड सपोर्ट ग्रुप पे भी थोड़े एडोपियन पेरेंट्स इस दफ़ा कम थे, नॉन एडोपियन ज़्यादा आए थे. आई एम काइंड ऑफ होपिंग के नेक्स्ट सपोर्ट ग्रुप पे आई एम गोइंग टू सी मोर ऑफ आवर ओन पेरेंट्स एज वेल. सो ख्याल रखिएगा, एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है. टेक केयर.